पूर्व क्लास रे केते सारदिलो हमें 40 रे एटा आप रे अछि कि क्वेश्चन नाही काली मु कहितली मते कहइबो बोली कि हो छाड़ काली हमें आलोचना करथिलु फ्रिवोलियस जोड़ा थिला यार मीनिंग कोन कहितली केयर फ्री नहीं कोन थिला केयर फ्री ठीक अछि चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओके रिवोक बोली जो अच्छे शब्दटा यार मीनिंग कौन रे ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिवोक रिवोक रो अर्थ कौन एटा देछि टू हैंग झुलेबा ओके टू स्कॉल लाइटली टू प्रे फॉर मर्सी ना टू लर्न समथिंग रिवोक रो मीनिंग कौन को हैंग हबो ना स्कॉल हबो ओके ना सेमती हमें टू प्रे फॉर मर्सी हबो ना लर्न समथिंग हबो रिवोक रो अर्थ कौन प्रे फॉर मर्सी हबो नहीं टू स्कॉल लाइटली अर्थ कौन स्कॉल रो अर्थ होची कि इफ समवन डूइंग रॉन्ग थिंग बुझाइला कि नहीं जने व्यक्ति कौन करची किछि खराब करिछि बा भूल किछि करिछि बुझाइला कि नहीं सही समय रे आमे जो तागिद करूचे जो गाली करूचे ताको दैट इज कॉल्ड रिवोक बुझाइला कि नहीं बुझि पाला ना नहीं तनो कोन हबो टू स्कॉल लाइटली कोन हबो रे टू स्कॉल लाइटली नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देछि कि व्हाट चेंज कम्स ओवर द ऑथर्स ग्रैंडमदर इन दिस इवनिंग संध्या समय रे ओके ग्रैंडमदर करो चेहरा रे बा ग्रैंडमदर करो भितरे कोन एमती परिवर्तन आस्थिला बोली सेठारे कहिसंती एते देछि सी डिड नॉट प्रे से प्रार्थना कर नथिले से दिन हो कि नहीं ना सी स्टार्टेड डांसिंग विथ वाइल्डली हां से डांस करथिले ना सी कलेक्टेड ड्रम्स फ्रॉम नेबर्स ना ऑल द अबव कोन हबो प्रथम कथा होची ऑल द अबव सुनो सेदिन से प्रार्थना करथिले कि प्रार्थना भी कर नथिले तापर कोन कहछि सी स्टार्टेड डांसिंग वाइल्डली एटा डांसिंग कथा नो हो कि नहीं एटा सिंगिंग हवा कथा एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक मे भी ओके से कलेक्ट करथिले ड्रम गुडा को हो कि नहीं नेबर्स को थारु तो आमे एठारे एटा एक्चुअली सिंगिंग हबो हां गीत गाइबा आरंभ करथिले तनो कोन हबो ऑल द एबो कारण देखो दीटा प्रश्न रो उत्तर गोटे प्रश्न रो आंसर केते बेले भी दीटा हेबो नहीं बा तीनटा हेबो नहीं जदि दीटा हेछि एटा प्रश्न भूल अछि एटा ए जो हमर जो ऑप्शन जोडा दैछि ए ऑप्शन एटारे भूल अछि बुझला कि नहीं तनो कोन हबो एटा ऑल द अबव एटा चेंज हेतो देखिबो तुमे व्हाट डिड द ग्रैंडमदर्स थिंग ऑफ द कलेक्टिंग द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड जते बेले से ग्रैंडमदर कोन करले रे नेबरहुड रो जो लोक माने जो बन थिले तांकर वयस्क व्यक्ति माने जो बन थिले से माने कलेक्ट करला परे से माने कोन एम्ति गायचंती से प्रेयर बोलिचंती सेटारे कम होम कमिंग वॉरियर सॉन्ग गायचंती ना रिसेप्शन सॉन्ग फॉर द ऑथर ना स्क्रिप्चर बोलिचंती कोन होइची सेटारे को से माने होम कमिंग वॉरियर सॉन्ग बोलिचंती नहीं कोन बोलचंती होम कमिंग वॉरियर सॉन्ग नेक्स्ट देखो ता माने एठारे हबो बी कोडा हबो बी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट मॉर्निंग रे एम्ति कोन हेतिला रे व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ओके नेक्स्ट मॉर्निंग रे कोन होइची द ग्रैंडमदर बिकम अनकॉन्शियस अचेत हे जातिले ग्रैंडमदर सेदिन नेक्स्ट मॉर्निंग रे ना से एटा कहै ग्रैंडमदर लॉस्ट हर सेंस तार सेंस होरेथिले ना ग्रैंडमदर वाज टेकन इल ना ग्रैंडमदर स्टार्टेड टू सिंग अगेन कोन हबो ता पर दिन ओके कोन हेतिला हां ग्रैंडमदर
असुस्थ होइथिले ना है कि नहीं तांकर जो माँ थिले ग्रांड मदर जे थिले से कोन होइथिले असुस्थ होइथिले तण कोन हबो टेकन इल हबो बुझेला कि नहीं जय श्री राम ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोन देछि व्हाट इज द ग्रांड मदर टेल ऑल द फैमिली मेंबर्स ग्रांड मदर कोन कहिथिले समस्त फैमिली मेंबर्स को टू कॉल द डॉक्टर टू ब्रिंग हर होली बुक पवित्र बही आण बोली कहिथिले टू ब्रिंग हर ए न्यू रोजारी दैट हर एंड वाज नियर कोन कहिथिले रे दैट हर एंड वाज नियर हा कि नहीं तार समय सरी सरी जाउची बोली कहिथिले व्हाट डिड द ग्रैंडमदर से दैट शी वाज नॉट गोइंग टू टॉक एनीवन व्हाट डिड व्हाई डिड ग्रैंडमदर से कहा सहित कथा हेबेनी बोली से काहे की कहिथिले एठे दीची शी बिकम बिकॉज शी कैनॉट स्पीक से चाहू नथिले कथा पे बिकॉज शी वांटेड टू प्रे से प्रे करा पे चाहूथिले बिकॉज शी वांटेड टू डाई पीसफुली ओके बिकॉज शी वांटेड टू टॉक विथ द लेजेंड्स एंजल सॉरी तनो कोन हो बेटा को काहे कि से कहिथिले कि से कहा सहित कथा हेबे नाही कोथि पे कहिथिले why because she wanted to pray बुझेला कि नहीं बी हबो हां वेरी गुड बी हां कि नहीं से प्रे करिया पे चाहूथिले ओके व्हाट डिड दे नो दैट she was dead sorry how did कोन आज प्रश्न गुडा भूल पड़छ how did know that she was dead केमिति जानले ओके she closed her eyes आखि बंद कला she the rosary fell from her finger the doctor declared her dead ना her last prayer was said loudly कोन हैला केमिति जानले रे कोन हबो एटा तांकर जो रोजारी थिला हातरू से रोजारटा कोन हैला खसी पड़ीथिला तो एथरु जणा पड़ला कि से आउ नाहांती हो कि नै व्हाट वाज द कॉस्ट्यूम रिगार्डिंग डेड पीपल उडे मृत्यु बा मरिथिबा लोकंकर कॉस्ट्यूम किपरि थाए बोले एठारे प्रश्न अछि टू कवर द डेड बॉडी विथ ए रेड शर्ट टू कवर द डेड बॉडी विथ ए व्हाइट शर्ट टू कवर द डेड बॉडी ओके सेमती गोटे ब्लैक शर्ट ना अनकवर्ड कोन थाए को जने मृत शरीर को जदि हम देखिबा रिगार्डिंग डेड पीपल रो कॉस्ट्यूम साधारणतः कु प्रकार थाउची कु प्रकार थाउची व्हाइट साधारणतः रहिबा कथा हां कि नहीं किंतु एठारे रेड शर्ट रे कवर करा जायतला ताको बही पढिचो कि नहीं हां कि नहीं कुठे कवर करा जायतला रेड रे कवर करा जायतला नॉट व्हाइट बुझेला कि नहीं व्हाइट रे हबा कथा बुक रे लिखा जायछि रेड ठीक अछि तापर देखो why did family members stops halfway in this courtyard okay why did the family members stop halfway in the courtyard काहे कि समस्या जो courtyard रहिले as there were 100 of ants थिले बोली ना sparrow थिले ना monkey थिले ना dogs थिले कोन हबो स्पारो थिले हां कि नहीं कोन थिले स्पारो थिबा जगु से माने कोन करचंदी किछ समय सेटारे रहिचंदी why did the sparrow not take notice of the bread crumbs laying on the floor जो ब्रेड थिला बिछै दिया जायथिला हां कि नहीं सेही ब्रेड को स्पारो गुडा को नोटिस कर नथिले काहे कि दे नेवर एट ब्रेड क्रम्स से माने केबे खाइ नथिले से गुडा को ना the bread crumbs are split they were also na mourning the death of the grandmother na they had come to eat the chapati कोन हबो से माने मध्य दुख करूथिले हा कि नहीं से माने मध्य कोन करथिले दुख करूथिले ग्रैंडमदर मृत्यु रे तापर देखो एटा देछि the bottle dropped and broke to pieces एटा ग्रामर देखो बोतल टी कोन हैला रे खसी गला हा कि नहीं बोतल टी कोन हिची खसी जाय ड्रॉप बोली कहछि हा कि नहीं एमजी दिया जो डिक्शनरी रेफरेंस स्किल तुमको बतैथिली ना
हाँ कि नहीं एमती शब्दटी थिबो बोतल टी जोटा अछि से खसी जाइछि आउ भाग माने भांगी जाइछि खंड खंड हो जाइछि ओके पिक आउट दिस करेक्ट डिक्शनरी मीनिंग ओके एथिरे आमे प्रॉपर डिक्शनरी मीनिंग को खोजी के आनो बोली कहला एठारे ड्रॉप को आमे कोन बुझिबा टू फॉल बुझिबा ना गो डाउन बुझिबा बिकम वीकर बुझिबा ना टू स्लीप अवे बुझिबा कोन हबो को गो डाउन हबो नहीं काहे गो डाउन हबो टू फॉल अरे पड़ी जिबा ना ड्रॉप कहले आमे बोतल टा खसीबा एटा पड़ीबा टू फॉल हबो गो डाउन हबो नहीं बुझेला कि नहीं नेक्स्ट देख एठे देखा गोटे दे ड्रॉप मी दिया जाइछि हां कि नहीं ड्रॉप मी ए पोस्ट कार्ड व्हेन यू गेट देयर मते ड्रॉप कर दिया बोली कह जाइछि ए एठे जदि आमे बुझिबा ड्रॉप रो अर्थ कोन एटा कहछि टू फॉल टू गो डाउन टू सेंड ए लेटर टू सेंड अवे कोन हबो रे एठे ड्रॉप रो मीनिंग कोन बुझिबा हम आ हां एटा कोन कहछि ड्रॉप मी ए पोस्ट कार्ड कहछि कोन कहछि एठारे पोस्ट कार्ड कथा कहछि पोस्ट कार्ड व्हेन यू ओके व्हेन यू गेट दैट तमे जतबे सेठे पहुंचीबो तमे कोन करिवो ताकू किछि देखा जाउनी कोन रिजोल्यूशन बढ़ा ओके पोस्ट कार्ड कथा कहछि तण पोस्ट कार्ड को जदि आमे बुझिबा ताले कोन हबो रे सेंड ए लेटर हबो कि नहीं सेंड ए लेटर हबो बुझला कि नहीं तापर देखो हेवी रेन अत्यधिक वर्षा कैन ए ड्रॉप इन टेम्परेचर ओके हेवी रेन द्वारा कोन होची टेम्परेचर ड्रॉप होची देखो टेम्परेचर ड्रॉप होची खसी जिबा हां कि नहीं एठा जदि हम बुझिबा ए रिडक्शन टू फॉल ना बिकम वीकर ना स्लिप हेवी रेनु माने रेनफॉल जगु बा ड्यू टू द हेवी रेनफॉल ओके टेम्परेचर जोड़ा रही सेटा कमी जाइए बुझेगा कि नहीं तो टेम्परेचर जेहेतु कमी गला तेणु एठार आम जो ड्रॉप को आम कौन बुझा रिडक्शन को बुझा ना टू फॉल को बुझा ना बिकम वीकर को बुझा ना सेमती द स्लीप अवे को बुझा कौन हम को ए बिकम रो मीनिंग कौन हम रिडक्शन है कि नहीं कौन हम रिडक्शन नमस्ते जय जगन्नाथ बुझेगा कि नहीं कौन हम एठारे रिडक्शन रिडक्शन अर्थ कौन कमी जीवा बुझेगा कि नहीं फ्यू ड्रॉप एठारे देख फ्यू ड्रॉप बोली कहिछि फ्यू ड्रॉप ऑफ टीयर्स ओके डोंट वॉश आउट सीन तमर आखिर है कि नहीं गोटे बुंदा जल जल तो हम कह पारिया नहीं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टीयर्स तुम आखिर जो लुह झरौछ तमे सही लुह द्वारा तमर पाप धोई हो जीव नाही बोली एठारे कह जायछि है कि नहीं तो आम एठारे यार एक्चुअली ड्रॉप रो मीनिंग कोन बुझिबा सीडिंग टीयर्स ए स्मॉल अराउंड मास ऑफ लिक्विड ना रिपेटेंस ना लिक्विड सब्सटेंस कोन हबो रे एठारे जो ड्रॉप बोली कह जायछि लुह को ड्रॉप बोली कह जायछि ना का कह जायछि एठारे हम कोन बुझिबा ए स्मॉल अराउंड मास लिक्विड है कि नहीं पूरा छोटो गोलिया हेतवा लिक्विड हम जतबे कांदुचे आम आखिर लुह धार धार पड़ुचे है कि नहीं ए मास लिक्विड बोली कह जाए ठीक अच्छे नेक्स्ट देख इट वाज हार्ड टू बिलीव फॉर द राइटर दैट हाँ राइटर को विश्वास करबा कष्टकर थिला बोली कह जाए हिज ग्रैंडमदर वाज वंस मैरिड हिज ग्रैंडमदर्स सेमती मेनी चिल्ड्रन ना हिज ग्रैंडमदर्स हैड हैप्पी फैमिली ना हिज ग्रैंडमदर्स हैड वंस बीइंग यंग एंड प्रिटी एटा हबो डी हबो हो कि नहीं उडा हबो डी हबो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देती व्हाट वाज hung above the mental piece रे तांकर कोन टंगा हितला ओके एटा देची हां ए टाइप रो पडिबो क्वेश्चन ओके तापर देची द राइटर ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट एटा तो राइटर कर ग्रैंडफादर कर पोर्ट्रेट तो टंगा देथिला है कि नहीं तापर देखो तापर कोन देची एटा देची द बेस्ट पार्ट ऑफ इट्स राइटर्स ग्रैंडफादर चेस्ट वाज कवर चेस्ट ता कुदरे कवर हेतला
व्हाइट बियर्ड रे कुतरे व्हाइट बियर्ड नहीं व्हिच thought was almost revolting to the writer okay को thought टा ताको बहुत किछि माने रिवोल्ट आनि दैछि बोली कहवा दैछि okay the thought the grandmother being generous the thought the grandmother being good housewife na the thought grandmother being once young eta na the thought grandfather sorry eta grandfather कथा कहछि परा the grandfather being once young the third grandfather being husband and the father कौन हबो the thought of grandmothers being generous eta grandmother कथा कहवा दैछि what was okay what thought was almost revolting to the writer writer को केउ जिंस बहुत किछि तांक भीतर परिवर्तन आनि the thought grandmother being a good housewife एक कथा तो कुआ जाए नहीं बुक रे कथा तो नहीं तो थॉट दैट रिवोल्टिंग कथा कुआ जायछि सेटरे वंस बीइंग यंग लेखा जायछि से जो पुणी थरे जो युवती हेबा हां कि नहीं से जिंस ताकू बहुत किछि प्रभावित करिछि बोली कुआ जायछि तनो एटा द थॉट ऑफ ग्रैंडमदर्स बीइंग वंस यंग हबा कथा एटा फादर होइछि बुझला कि नहीं नेक्स्ट देखो what seem quite absurd and thus undignified for this writer's grandmother. Grandmother's loves attached for her husband. Grandfather's scattered performance. Grandmother's account of games she used to play as child. Now grandmother's hard work for this large family. Could have a co. क्वेश्चन बुझलो ना नहीं व्हाट सिम रो अर्थ देखा जिबा सिम रो अर्थ कोन देखा जिबा क्वाइट ऑब्जर्व अनडिग्निफाइड द राइटर्स ग्रैंडमदर को जदी देखिबा नहीं कि रे व्हाट सिम कोन लागू थिला कोन देखा जाउतला क्वाइट ऑब्जर्व एटा कहछि ग्रैंडमदर जे अछंती लव एंड अटैचमेंट फॉर देयर हस्बैंड को सहित तांकर किछि लिखा जायछि नाही ना ओके grandfather's scattered performance grandfather को परफॉर्मेंस विषय किछि कहिछि नाही grandmother's account that games he used to play as a child हने छुआ बेले जो खेलुथिले से माने ह कि नहीं से कथा कुआ जायछि ना नाही तणु कोन हो बेटा the grandmother's okay account to games he used to play as a child ठीक अछि नेक्स्ट देखो how did the writer treat his grandmother's account of playing the गेम as a child केमिति ट्रीट करचंती एटा गोटे फेबुल एंड प्रॉफिट बळिया एटा हबो ह कि नहीं अरे हना नहीं ना फेयर टेल्स तो नुह ह कि नहीं फेयर टेल्स हबोनी द सेमति सिमरन 6 एंड एटा तो नुह तण कोन हबो एटा द फेबुल्स ऑफ प्रॉफिट ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देछि द राइटर ग्रैंडमदर्स लुक आज राइटर कर ग्रैंडमा केमिति देखा जाउतले लाइफ स्किल टेरिबल ओल्ड ना गॉडेसेस ना रिलीजियस ओन कोन राइटर करो जजमा किमती देखा जाउतले अरे टेरिबली ओल्ड बुझला कि नहीं टेरिबली ओल्ड टेरिबली माने कोन बुझो तो भयंकर हां कि नहीं टेरिबल रो अर्थ सदा बेले मु पूर्व कहती इंग्लिश वर्ड रो मीनिंग सदा बेले समान न बुझला कि नहीं टेरिबली ओल्ड रो मीनिंग तुम या बुझो नहीं कि संपूर्ण माने से वृद्धा जना पड़ुतले टेरिबली ओल्ड रो मीनिंग होउची से वृद्धा जना ही पड़ु नतले बेले बेले ए टाइप रो भी प्रश्न आस्ते बुझला कि नहीं जड़ा देखो भयंकर देखा जाउची बोलचते हमें बेले बेले हां कि नहीं तो एटा दीटा मीनिंग रे भी शो होउची तणु एटा कोन हो टेरिबल गॉडेसेस कहले कोन रे देवी देवी वाला देखा जाउतले कि नहीं तापर देखो हिज ग्रैंडमदर वाज ऑफन फोन तांकर ग्रैंडमान कोठ हम कोन पाइबा टेलिंग ए ब्रेड्स ऑफ रोजारी एटा तो हां कि नहीं कोन एटा हबो टेलिंग ए
ब्रेड ऑफ रोजारी तो ओके नेक्स्ट देखो द राइटर्स ग्रैंडमदर्स वाज लाइक द राइटर्स लैंडस्केप इन दिस माउंटेन ओके ता कुआ जाय तांकर जो सौंदर्य जोडा सेटा माउंटेन सहित कंपेयर करा जाय व्हाट डज दिस कोट एक्सप्रेशन मीन एथुर हम या कोन बुझुचे एटा 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 इट इज द मीनिंग द काम एंड पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड तांकर जो शांत स्वभाव को एकटा दर्शैछि ना इट इज मीनिंग द सीरियसनेस ऑफ द माइंड इट इज मीनिंग द स्टेट ऑफ लोनलीनेस एकुटियापण को बुझौछि ना इट इज मीन द ऑब्जर्व द साइकोलॉजिकल द कंडीशन एटा हम कोन बुझुचे लाइक वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन दिस माउंटेन कथा जो कुआ गला एटा कहा को बुझौछि कहा को रिप्रेजेंट करूछि तांकर कामनेस को रिप्रेजेंट करूछि का को रिप्रेजेंट करूछि तांकर काम शांत स्वभाव आकु रिप्रेजेंट करूछि बुझला कि नहीं तापर देखो तापर देखिछि वेयर सॉरी दे वर गुड फ्रेंड हु वर दे राइटर आमे जदि कहबा एटा दे वर गुड फ्रेंड कहले कि राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर है कि नहीं दे वर गुड फ्रेंड मींस के राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर होबो ना आउ की होबो की नहीं की व्हेन डिड द राइटर ग्रैंडमदर से द मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंगसंग जते बेले से कोन कहउतले ताकू मॉर्निंग प्रेयर कहउतले गुणगुण होइकिना व्हेन गोइंग टू द टेंपल जते बेले सान टेंपल जाउतले से समय व्हेन द मेंटल वर्क होतले से समय ना accompanying the writer school ना when the bath and dress to the writer कोन हबो जते बेले ताकू गाधै दउतले नहीं आ ड्रेस अप कर दउतले से समय से गुणगुण होइकिना मॉर्निंग प्रेयर गुडा को गाउतले से समय तापर देखो द राइटर ग्रैंडमदर सेड द मॉर्निंग प्रेयर्स बिफोर द राइटर होपिंग दैट काहे से गाउतले कारण से चाहूतिले से ताकू सुनु एंड ताकू मने रखू नहीं तनु कोन हबो इन द राइटर कुड लिसन एंड गेट टू नो बाय हार्ट ताकू मने रखू या तो ओके नेक्स्ट तक तापर व्हाट वेयर द थिंग दैट द राइटर कुड कैरीड विथ हिम स्कूल गला वाला से कोन कोन नियंती प्लास्टिक बैग containing notebook and the pencil and the ink pot ना वुडन स्लेट नउथले वुडन स्लेट नउथले तनु कोन हबो एटा वुडन स्लेट इन इंगदान इंक पोट थिला एंड रेड पेन थिला एटा तो ओके नेक्स्ट व्हाट कुड द विलेज डॉग डू व्हेन द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर रिटर्न होम जते बेले से माने आस्तुथिले घर को आस्तले ना से समय विलेज डॉग गुडा कोन करथले द विलेज डॉग फॉलो देम हां कि नहीं फॉलो करथले से मानको हां कि नहीं एंड ग्रोइंग एंड फाइटिंग ईच अदर फाइटिंग करथले फॉर चपाती पई हां कि नहीं चपाती पई फाइटिंग करनथले तापर देखो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द राइटर्स एंड द ग्रैंडमदर राइटर्स और ग्रैंडमदर कर भितरे टर्निंग पॉइंट कोन थिला व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ओके देखो एटा कोन दैछि रे व्हेन द राइटर वेंट टू टर्निंग पॉइंट जते बेले से माने सिटी को जाइचंती लिव ग्रैंडमदर इन विलेज गा को जजमा को गां रे छाडी देकी पळेचंती कि नाही तण एटा भी होबो नाही द पेरेंट्स द राइटर्स ओके व्हेन द राइटर्स पेरेंट्स सेंड फॉर देम जते बेले सान को डाकी चंदी एटा सेंड रो अर्थ पठाई देबा नु बुझेला कि नहीं डाकीबा व्हेन सी बिकम मोर रिलीजियस जते बेले से अधिक धर्मपरायण होइछि से समय एटा होइछि ना व्हेन द राइटर्स ग्रैंडमदर टुक द स्पेनिंग फॉर दिस होल डे ना से चोरखा घुरौथिले से समय होइछि कोन हबो एटा व्हेन द राइटर्स पेरेंट्स सेंड फॉर देम जते बेले सान को डाकी चंदी शहर को आस दैट वाज द टर्निंग पॉइंट हां कि नहीं सेटा ही थिला कोन से मान करो टर्निंग तापर देखो व्हाई डिड द राइटर्स ग्रैंडमदर डू नॉट गो टू स्कूल विथ राइटर काहे जाउ नथिले से द राइटर वेंट टू इंग्लिश स्कूल इन ए स्कूल बस रे जाउतले ना तनु कोन हबो एटा स्कूल बस हबो सी हबो ठीक अछि नेक्स्ट देखो डिड द राइटर्स ग्रैंडमदर फीड ए डॉग इन दिस सिटीज हाउस डॉग मानु खाइबा दोतले कि सिटीज हाउस रे नाही ना हाउस ओके शी यूज्ड टू डू इन द विलेज से गां रे करूथले एटा ना हो कि ना तणु से कोन कह सिटीज हाउस रे कोन करले नो शी डिड नॉट फीड डॉग्स इन सिटीज हाउस यस शी फीड डॉग्स इन सिटीज हाउस तापर देख नो शी वाज नॉट अलाउड टू डू सो ओके नो
सी had no interest कौन हबो फिर दे एटा फास्ट हबो हां कि नहीं से खाइबा को दउ नथिले एटा तो तेणु ए कर दो ओके तापर देखो whom did the writer's grandmother took to feed ओके सिटी मानकर से कहा को खाइबा को दउथिले कैट को बुल को सेमती क्रो को ना स्पारो मानन को का को स्पारो मानन को तेणु स्पारो कर दो ठीक अछि नेक्स्ट देखो What was mother's distress? काहे की why was mother distress? काहे की से टिके distress थिले एटा not teaching about God and scripture सेति में से distress थिले ना no teaching about culture ना the useless the English school थिला सेटा ना teaching were based on the foreign culture थिला कोथि पई जेतु सेठारे गॉड को विषय रे आ स्क्रिप्चर विषय रे पढ़ा जाउ नथिला सेति में सेति टिके दुख करिथिले हां कि नहीं टी डिस्ट्रेस थिले तापर देखो व्हिच थॉट मेड ओके ग्रैंडमदर्स वेरी मच डिस्टर्ब कु जिंस ग्रैंडमदर को बहुत डिस्टर्ब करथिला फ्यूचर कुड नॉट बी ब्राइट तारो फ्यूचर ब्राइट हो नै ग्रैंडसन कर ना तांगर ग्रैंडसन जे थिले से म्यूजिक लेसन सिखुथिले बोली ओके ना हर इनएबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द ग्रैंडसन से तांगर ग्रैंडसन को केयर नै पर नथिले सेति पई ना द फीलिंग ऑफ द being old and lonely कौन हबो रे म्यूजिक लेसन से सिखुथिले ना है कि नहीं कौन म्यूजिक लेसन सिखुथिले अरे म्यूजिक लेसन ता भल लागु नथले ता जेमा को नेक्स्ट देखो why was the grandmother disturbed about music lesson काहे कि से डिस्टर्ब होतले म्यूजिक लेसन पई बिकम म्यूजिक लेसन हार्मफुल इफेक्ट म्यूजिक लेसन जोटा अछि एटा ओटा खराब प्रभाव पकोची म्यूजिक लेसन को डिस्ट्रॉय हर द ग्रैंडसन्स ब्राइट कैरियर ब्राइट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर दो बिकॉज म्यूजिक लेसन लूड एसोसिएशन एंड they were meant the hallowed the beggar and not gentle flock she fear that okay her grandson might go to the wrong path कोते पे रे को lewd association थिला हला lewd association because the lesson had lewd association they were meant the harlot and the beggars for not gentle flock बुझला कि नहीं सी नेक्स्ट देखो सी तापर देखो एटा चिरुपिंग मेड के चिरुपिंग करूथले चिरुपिंग के करला पैरट स्पैरोची हां कि नहीं के करथला रे स्पैरोची करथला तापर एठे देची what was the last physical contact between the writers and his grandmother according to the writer thinking writer भाबिया कथा that last physical contact जदि हमें कहबा ताले कोटा को बुझिबा ओके his grandmother close लविंग एम्ब्रांस ताको जो माने एम्ब्रांस करथले कोळे तो हम कहबानी एम्ब्रांस कले कोन रे ताको हक करबा हां कि नहीं now putting hand on his head हाथ रखि देते ता मुंडो ऊपर the writer touching the grandmother's feet एटा तो होबो नहीं फीट को टच कर नथले grandmother kiss on his forehead एटा हां कि नहीं तार मुंडो को से कोन करथले forehead को kiss करले next what remark did the writer give on the grandmother's physical condition कोन कहया पय चाहती फिजिकल कंडीशन को नेकना टेरिबल ओल्ड कहचंदी से हां कि नहीं ना नॉट अटर द फ्लुएंटली एटा तो कहि नांती ओके लुक ए डे ओल्डर माने कोन कहचंदी टेरिबल प्रथमटा ग्रैंडमदर्स लुक्स ए टेरिबल ओल्ड बुझला कि नहीं ग्रैंडमदर लुक्स ए टेरिबल ओल्ड अरे grandmother did not look a elder grandmother did not look a elder एटा हां रे हां हां टेरिबल ओल्ड से सॉरी मार रिमार्क कोन थिला एटा राइटर को रिमार्क पचाछि हां रे बाबू एटा हबो his grandmother did not okay look a elder एटा हबो बी हबो नहीं सी हबो बुझला कि नहीं सी हबो नेक्स्ट देखो what were the happiest moments of the grandmothers in the first day of his arrival आसार प्रथम सबठु हैप्पीएस्ट मोमेंट कोन रे
से देती है स्पीकिंग द ग्रैंडसन द लॉन्ग टाइम बहुत समय धरिक ना कथबार्ता हेले एटा तो नुह फीडिंग स्पारो लॉन्ग टाइम्स विथ द प्रिविलियस रिबुक now worshipping the reciting prayers and the telling कौन हबो फीडिंग स्पारो हाँ कि नहीं सबुठु हैप्पीएस्ट मोमेंट जदि आमे कहबा ताले कौन हबो रे फीडिंग स्पारो लॉन्ग टाइम जो खाइबा को देथिले फीडिंग स्पारो नहीं नेक्स्ट देखो हाउ डिड हिज ग्रैंडमदर सेलिब्रेशन with the writer return writer जेतले आसले केमति सेलिब्रेट करथले he stopped praying कलेक्टिव डाकिथले समस्त को हो कि नहीं आ कोन करथले से माने ड्रम बजेथिले वारियर सॉन्ग गाइथिले हो कि नहीं एटा थिला तापर देखो एटा दिए जे द राइटर्स ग्रैंडमदर्स लेड पीसफुली इन हिज बेड शांत भाव रे पड़ी के रहिले हो कि नहीं ओके praying and telling her bread and asked the writers to read the Srimad Bhagavat and sung the traditional bhajana na told all his family members to sit around her कौन हबो तो काहे कि शांत भाव रे पड़ी के रहिथिले praying and telling her मरिबा पूर्वरु से कोन करथिले रे प्रार्थना करथिले आ जेतबे प्रार्थना करू करू मरि जायतिले तार हातरु माळा गडी पड़िथिला हो कि नहीं what made the family members of this writer thinking the grandmother's was it केमनि जानले से माने तार जो लाइफलेस फिंगर जो हो कि नहीं रोजारी पड़ी जायतिला जोडा देखि कि से माने जानि परले नेक्स्ट ग्रैंडमदर वार्प्ड इन कुटरे रेड शावर ग्रैंडमदर कुटरे घोड़ा जायतिला रेड नेक्स्ट लास्ट वन ओके what strange and the pitiable sight was seen near the dead body the grandmother कोन एमती जणा पड़थला जो साइनटा बतै दोथला कि जेजमांकर मृत्यु पाखक आसलानी 100 of the people from this locality comes to see grandmother eta the thousands of sparrow sat scatter on the floor without any chirruping the women of the neighborhood were seen to weeping the bitterly all those gathering where are shedding tears कौन हबो कौन हबो क्वेश्चन बुझलो कि नहीं what the strange and pitiable sight was seen near the dead body sorry dead body रो चारि पाखरे कोन एमती जिंस घटिथिला बोली कहिथि स्पारोचिप माने कोन करथले साउंड करथले नहीं स्पारोचिप माने कोन करथले रे साउंड तनो दिस वन ओके एटा थिला तमरो क्वेश्चन आंसर जो माने नुआ आछन चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो सब दिन क्लास होची जोड़ी हो जो मैंने आप डाउनलोड करना टेस्ट को जाके आवर CHSE ऐप डाउनलोड करो ठीक है।